Presentation is open. not visible right now. Just I'll close once and I'll. Is it visible? No, sir. It's not. Yeah. Now 50 is showing. Yes, sir. Very good afternoon to all of you. It Good is my afternoon, sir. privilege to be invited by my alma mater, Guru Ghasidas University. I was a student over University of Forestry and Wildlife Science. Uh, Today is a very auspicious day because today is the World Wildlife Day, and I would like to convey my deepest regards to my first wildlife guru, Dr. S.S. Dhuri. I think he is there. Uh, Dhuria sir is there, na? He will join, sir. He will join soon. Okay, so should I wait for some times or No, sir. what You is? can continue, sir. He will join right now. Okay, fine, fine. So I think you are all MSc students currently or Sir, BSc or we have both UG PG students as well as some scholars are also there, and a few faculty members are also there. So okay, okay, a mixed type of participants is here. great. So my presentation would be a summary of all the presentation happened for last 1.5 days. It was started with our very beloved Mr. Rajneesh Singh ji. He Yes. is very proactive and we jointly work for All India Tiger Estimation Program MP portion. So my presentation and also Upen Dubey ji was there. When I was there as a student, Dubey ji was coordinator for Nature Club, Bilaspur. So those are the days we used to visit in Achanak Mad. Now it is Tiger is at the time it was wildlife sanctuary. So I think all of you have visited Achanak Mad, which is a very good protected area under Chhattisgarh. So my presentation would be on monitoring terrestrial prey and predator at various tropical forests of central India. We are all under the central Indian landscape. Chhattisgarh is also part of central Indian landscape. So my introduction already given by, so thanks for that. So before giving into the big lecture, the elaborate of all those lecture topic. So what is terrestrial? Terrestrial means related to planet Earth. Terrestrial animals are plants. That means they're living on the ground. Their aquatic animals are there, but my topic would be mostly focused on the land animals. So basically, I will be talking on prey and predator. So prey is an animal or bird that is killed and eaten by another animal or bird. So all those prey species, mostly we are focusing on carnivore. If we talk about the carnivore, the prey species is cheetal, sambar, nilgai, like that. And predator means carnivore, that animal that kills and eats other animals. Can you give one example of predator? I think it is a one-to-one communication is there. Na? Can you anyone explain me about predator? Lion. Can you give me example of predator? Lion, sir, lion. The tiger. Lion. Yeah, good. So these are the all combination of predator across the world. It can be started from prey and predator. It can be started from small mammals to large carnivores. Even sometimes insectivores are also termed as predator, and some insects are also termed as a prey. So these are very era of prey and predator in across the globe. But our topic is mostly on central India. So why predators are important? Because they are on the top in any ecosystem. Also, they're in the cultural ethos, and also their conservation means conservation of a complete system. So that's why predators are very important because they are controlling the entire ecosystem.
So I'd be starting with the fastest terrestrial predator in the globe. That is cheetah. These are photographs of John Alexander Harrington when Asiatic cheetah was here in India. But you know Sir, your that slide is not moving. Okay. Yes, sir. Okay. Right. moving. Okay, sir. Continue. Is it moving now? So all of you know about the cheetah introduction program. I think you are all interested on wildlife. You are having interest. So you know that on 17th of September in Kuno National Park last year, 8 African cheetahs from Namibia. The name was Asa, Oban, Sibli, Siasa, Sava, Bisli, Sasa, and Freddy. They are all introduced over there in Kuno National Park. And on this September 17th of February, 12 more cheetahs were released from South Africa, and now total number rises to 20. So they are all in different big enclosure, different small enclosure. These 12 cheetahs are now they are under supervision. Quarantine is called quarantine. But 8 cheetahs they are released and they are doing fine. They have started hunting. They are adapted with the local climatic condition. So people had a fear that whether they would adapt our local climatic condition, but predators are amazing. Their adaptability is amazing. So they adapted with our local conditions, and they have started hunting also. So cheetah means a spot, chitra in Sanskrit. So they are the fastest living animals in terrestrial living animals. You can say. Say their speed is 113 kilometer per hour, and their starting is the pickup is very high, and that is even more faster than our different jet or different bikes and all. So while running, they use their tail as a steer. So where they will move, so that the tail will can you can get or you can assume or whatever assumption you can make based on their tail movement. This is most for all big cats. This is very common. Their weight up to 50 to 60 kilo. The African cheetah lifespan 12 to 13 years. They are diurnal. Mostly cats are nocturnal, like tiger are nocturnal, and leopard. They are also nocturnal. But cheetah is diurnal, and they don't roar. They can't roar like tiger. They will purr like our cats, domestic cats. So there is a confusion between the different spotted animals like cheetah, leopard, and jaguar. There is a confusion. Cheetah, their spot, they are also having spot. Leopard, little bit larger in body size, and jaguar is much more body size larger, and they are the third largest cat after tiger and lion. If you look at the spot, the cheetah they are having the solid black spots, whereas leopard they are small, little bit densely and packed rosette pattern. Sir, pardon Whereas to sir. Sir, slide is not uh, moving. what is happening? Yeah. Right now. Okay. Okay, is it moving? Yeah, it's showing, sir. Is it moving? Showing now. If Yes, sir. if Yes, it is sir. not moving, then you can stop me and you can ask me to move. I'll Yes, sir. definitely coordinate like that way. So Okay, sir. in case of jaguar, if this picture is clear to you, is visible to all of you, you just see I have compared with 3 different cat species, spotted cat. That your cheetah, leopard, and jaguar. Cheetah they are having solid black spots, whereas leopard they are having small, densely packed rosette spot. Whereas jaguar, there is third largest cat, they are having little bit larger rosette with central spot. So jaguar and leopard they are also having some different in their rosette spot patterns. So cheetah, chitrak can be cheetah, can be leopard, can be jaguar. Even our ancient history in Harappa, Mohenjo-daro, even I've been to Gandhi Sagar. I've seen different, cave painting.
the description of cheetah is also there. Photographs are there. I couldn't put over there. If you've been to anytime in Gandhi Sagar, it's in Mandsaur. There are a lot of cave paintings. You'll be amazed that during that time, it was mostly done by the Adi Manav. They have made those cave paintings, but they have mentioned about cheetah. So cheetah were largely distributed across India. It showed that cheetah was largely distributed across India at that time also. And if you compare with cheetah leopard, when I have been to Dantewara side, I was amazed that the people were telling me, "जी सर यहाँ तो चीता है." तो मैं पूछता था चीता क्या है? बोले सर वो आते रहते थे तो हम लोग उस समय इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे. We couldn't distinguish that time that चीता और लेपर्ड में क्या है. हम लोग ये पढ़े थे किताब में पढ़ते थे चीता एक्सटिंक्टेड लॉन्ग बिफोर even before independence. Last cheetah was died in 1947. So ये सब चीज हम लोग को तब मालूम था पर लोगों में एक कंफ्यूजन होता था खास करके गांव के आसपास. दे लेपर्ड को they used to tell at the. So what is the basic difference between leopard and cheetah? Now we have cheetah, now we have leopard also in the same place. So leopard, they don't have longer leg like cheetah. Cheetah, they used to run. Whereas leopard, tiger, they used to ambush. They used to hide themselves and then jump. They don't go for long run because their body stoutness, body weight, they won't support long chase. Whereas leopard, Excuse me, cheetah. sir. Slide is again not moving, sir. Is it clear? Yes, yes. Okay, sir. I Hello, think sir. I'll go with this mode only then. If Okay. the slide is not moving, is it moving now? Can it be visible? Yes, sir. Visible. Hello? Visible, na? Yes, sir. Continue. So, so this is the basic difference between cheetah and leopard. तेंदुआ हम लोग लेपर्ड को बोलते हैं, चीता तो चीता नाम से फेमस है. इनकी सॉलिड स्पॉट्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं. देन चीता दे आर हैविंग टीयर मार्क्स इन देयर near to their eyes, just beneath their eyes. Whereas leopard, they don't have this type of cry mark or tear mark. Leg, I have already mentioned. Cheetah, they have long legs for running, whereas leopard, they are having short legs for climbing. They used to climb their prey species in some certain height of a tree, and they're very good climber. And their rosette pattern, already said, their build is very slender, means thin build, because they can jump, they can run, they can move in a very faster manner. Whereas leopard, their build is very muscular. Their head is bigger than cheetah. So these are the very unique characteristics and distinguished characteristics between cheetah and leopard. Is it visible right now? Yes, sir. Hello? Yes, sir. The slide is moving, na? Sir, moving. Sir, can So you there is a make it full confusion. screen? So there is a confusion between Asiatic and African cheetah. So what are the basic differences between Asiatic cheetah and African cheetah? Can anyone say? It is mentioned in my slide also that Asiatic cheetah is slightly smaller and slender. They're very much, body weight. If you compare the body weight, they're little bit smaller as compared to African cheetah. And then skin is also very light. African cheetah has a very light brown because they are mostly in a open type of habitat dwellers over there. Temperature is very high over there, so their body is little bit light brown as compared to our Asiatic one. If you think about the distribution, slide is moving, na? Hello? Hello? No, sir, it's not moving. We are on slide number 12. Slide number 12 is here.
Sir, please share your slide. Just, is it visible right now? Yes, sir. Visible? Can I go Yes, with sir. the full screen? Yes, sir. Can I- Make it full screen. Is it okay right now? It's showing, but not in full screen. I don't know. Some technical issues might be there. Uh, this is Sir, it's moving. moving, Yes, sir. moving. Yes, sir. Okay. Sir, please continue from So, this slide. Slide yeah, number yeah, 12. yeah. So, I was talking about the distribution of cheetah. So Yeah. historically, they are ranging throughout the sub-Saharan Africa and also Middle East, Central India. Everywhere their distribution was there, but because of fragmented habitat, right now Asiatic cheetah is surviving only in Iran and some portion, very few in number. Whereas African cheetah, they have a large distribution, but with a very small number. So we need very good, home because we need some expansion over there. So now we brought over there. If you talk about the earlier distribution of cheetah, Sorry, sir. is it It's visible? again not moving. Is it moving? Uh, okay, sir. Now it's showing. हाँ ठीक है सर, दिख रहा है अभी ये. दिख रहा है ना? जी. So if you look at that distribution of Asiatic cheetah in India, historical distribution, they are mostly found in different areas that time in north in Punjab to Tirunelveli district in southern Tamil Nadu, from Gujarat in western side to Bengal in east. So different records are there, but last cheetah it was shot by. People said that Maharaja Ramanuja Pratap Singh Deo, he shot the last three cheetahs in Sarguja state. It is currently in Korea district. That time it was 1948. But 1952, officially India declared there is no Asiatic cheetah in India. So then long term, there was a plan since before after also independence, there are a lot of plans for bringing cheetah in India. Why it is necessary to be here in India? Because it is large carnivores and keystone species of the ecosystem. Cheetah is the only species which extinct from the historical times. So bring back cheetah will provide better management and restoration of wildlife habitat, especially grassland. Because our grasslands are not managed after cheetah became extinct. The animal charismatic, it is own right, even it can attract a lot of tourists over there. African savanna, when cheetah is there, lot of people they are attracted over there, they are visiting over there. So cheetah is here, that means bringing or boosting our local economy, tourism economy. So this is also a part of that bringing cheetah program. So they are the apex predator of grassland. Is it moving? Hello? Yes, sir, moving. Moving, huh? Yeah. So Yes, sir, moving. habitat mostly they are present in bushland, semi-desert habitat, grassland and plains, and African plains also. So they are preferring prey species. Fastest predator, they are preferring prey species, and they are also very fast. From gazelles, wild beast, impalas, boar, chinkara, blackbuck, sambar, and other small herbivores. So in India, the home was identified in Kuno Palpur because why Kuno was selected? It is in centrally located. Their habitat is almost similar to the habitat over there in Africa. So prey base is also there. Cheetal and blackback can be prey of cheetah in India. When we plan to bring cheetah over there, we discussed about the Asiatic cheetah, but Iran government they completely rejected our
our appeal to bring cheetah, Asiatic cheetah, to provide us the Asiatic cheetah, because they have very small in number. So we then lot of research happened, and then found that genetically they are not very distinct. So African cheetah can be brought over here. So experts commented that African cheetah can also survive over there. The team from African like Kenya, Namibia, so they came here, they saw, they checked, and they all inspected different habitats like in Kuno Palpur, some areas of Rajasthan, and then found that Kuno can be an ideal option for bringing cheetah in India. So initially it is Kuno, but later it will be expanded in Nauradehi, Gandhi Sagar. I was very fortunate that I was a part of state committee member. I've been to Kuno for initial assessment time, and also in Nauradehi, mostly for prey-based assessment, whether this prey is available or cheetah or not. So I was a part of that state government constituted committee, MP state government constituted committee member. So apart from cheetah, so we are known for our tiger. India is our national animal is a tiger. So apart from tiger, we do have predator like panther or leopard. We have wild dog, then wolf, then other small carnivores. Though lakarbagga or hyena, it's not truly predator; they are mostly scavenger. But we consider in All India Tiger Estimation Program in a predator scale. We have jackal also, sloth bears. The sloth bears are not; they are omnivores. They are not truly, carnivore or predator. They sometimes scavenge, but we considered is bear as a predator because Asiatic black bear, they are found that they killed and eat in animals. So they are predator. But in case of sloth bear, they are not truly predator. But we consider in All India Tiger Estimation, sloth bear also in predator category. Apart from those large predators, we do have very small predators like rusty spotted cat, then rattles, then civets, then caracal, then Asiatic wildcat, then a lot of mongoose, then different jungle cat varieties. So these are there as a terrestrial, predators, small predators, because we are assessing prey and predator. We need to assess the small predator as well. So we can track them with the help of their pug marks. Earlier we used to track them, or we used to monitor them through their pug mark. But lot of anomalies happened, lot of hue and cry happened. So government of India then decided to develop some credible monitoring system, because you have heard about the tiger completely vanished from Sariska tigerism during 2004. So it was a challenge that we need to develop some credible monitoring system, because all predators, they're acting as a top predator. As I told, they're maintaining the balance of the ecosystem. They are globally endangered everywhere under their tremendous threat. They are very elusive by nature. So there should be a counting methods. We cannot easily simply count them like human count. You have to develop some methodology to count them accurately. So we need to know the trend of a population, whether it is increasing or decreasing over the time in PAs. So what would be the ideal source population sites, from where their breeding nursery, and from breeding nursery to where they are dispersing. That breeding nursery is considered as a source population site. It need to be monitored over the period. So need a credible monitoring system to understand this breeding nursery. And we also need to understand the connectivity, because fragmentation is happening over any landscape. So from one fragmented landscape to another fragmented landscape, there should be a connectivity. You must have heard that tiger earlier used to monitor movement. They're moving from Achanakmar to Kana to Bandhavgarh. We have big connectivity over there, but now it is fragmented. So in that case, corridor is there.
So we have to maintain those corridor, and we have to regularly monitor those corridor whether they are viable or not. So in that case, we need to develop some techniques used for enumeration of carnivore population. Is it visible? Hello? Yes, sir. Visible, right? It's moving. Full screen is difficult to because if I'm moving for the full screen, but that is stuck somewhere. I don't know. It's a technical problem. I'm helpless over there. So we are developing different techniques for monitoring those big cats, big carnivores, large carnivores, or predator. We used to monitor by pug mark, but pug mark has lot of critics. But nowadays, pug mark is used only for indices, sign indices. We are counting the pug mark sign. This is not used to count tiger number nowadays, because a lot of people criticize Ullas Karan, lot of scientists they have raised question because substratum to substratum the pug mark varied and it is giving a false impression of number. So to avoid those false impression, we now use the pug mark as an indices but not as a counting population method. But we do have some advanced method like scat DNA from microsatellites. We do have camera trap. So, but which technology is giving us the robust result? There is a study by Goel et al. In 2011 at Ranthambore. We have studied with three different methodologies like PugMark, camera trap, and scat DNA. And we have found that PugMark might be with less cost involvement and less accurate. It is lessly accurate also. Whereas in case of camera trap, cost involvement is less, but accuracy is high. Scat DNA, maybe we are having the very accurate data for population estimations, but cost involvement is very high, and we need a skillful person to analyze our data, population estimation data. So in that case, we can safely say that camera tap is the method where we can estimate, we can use for less cost involvement and also get a high accurate data for population estimation of species. Marked species, not the all species, the species which is they are having marking pattern can be identified through camera. If you look at the history of camera trap, that word photography came from two Greek words, that means writing with light. आप लोगों में कितने लोग कैमरा टैप इस्तेमाल किए फील्ड में? आप लोगों में कोई है जो कैमरा टैप को फील्ड कंडीशन में इस्तेमाल किए? Yes, sir. देखे कैमरा टैप कहाँ कैमरा टैप इस्तेमाल किए आप लोग? सर गुरु घासीदास नेशनल पार्क में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क में इस्तेमाल किए। ठीक है, तो ये जो कैमरा टैप है, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मींस राइटिंग विथ लाइट. Then the time frame, it was initially it was started with 1839. Then on the time development, then it is also modified. It was only people said in early days in China, people used to use that different camera for taking photographs and all. But India, for scientific studies and in globe also, this attempt was first made by Professor G. Fries in 1863. Just think of that, long before we are thinking for deploying camera traps over there. So camera trap were deployed long before in early 80s, 1890s also, how to analyze the data, and then started developing with Trailmaster in 1993. We have had a very good remote sensing device. I mean, it's a remotely triggered devices that can capture the photographs. Ullas Karan, you must have heard about Ullas Karan. He is a champion tiger biologist. He used these automated camera traps to individually identify tigers in Nagarhole, and then subsequently it was developed. It was used to estimate densities of not only tiger, marking pattern we have in jaguar, and then leopard, ocelots. So these methods are widely then used, and time by time that estimation utilization of camera trap became very it's a widely accepted method that you can get a data very accurately.
So these methods now followed by National Tiger Conservation Authority and Wildlife Institute of India for All India Tiger Estimation Program. So this widely accepted method, they purely reviewed that this method can be accepted for to enumerate population of tiger and other co-predator like leopard also. So last day, Rajneeshji already mentioned that we do have different sensor like Trailmaster, infrared sensor. Infrared sensor means that if you see that infrared, there is an infrared beam, and if it is discontinued, then this will instruct the Trailmaster other devices, receiver devices, that you should flash the camera, you should flash the light and take the photographs. Flashing light means in dark condition. If it is not dark condition, then there should be flash of movement. And then hint sensor camera, then motion detector, movement pattern, the fluctuation of movement can be detected by this motion detector camera. So these are the different devices. Inside the devices, it is with lens, it was with recording media, the storage devices, it is with image processing engine, also image sensor. So this is the basic how it one camera inside wise there looks like. So better camera means which is having a good field of view. If an animal moving, it can capture inside or multiple trigger mode. So this can be good field of view. That means they are having a good detection range also. So these are the earlier what I have mentioned. Those are analog camera, means film-based camera. Now all those cameras are discarded. Now we are using all digital cameras over there. So these are varieties of digital camera which are using. The current one which we used to use, that is Kadivac C1. Have you used Kadivac C1 before in Guru Ghasidas? Hello? 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 Can you hear me? Yes, sir. I was just asking a question because it should be a, हम दोनों ही बात करें तो अच्छा है. आप लोग गुरु घासीदास में जो यूज किए थे, ये कार्डिबैक यूज किए थे क्या? कौन सी कंपनी का इस्तेमाल किए थे आप लोग? Okay. This is the camera trap. They're having infrared sensor, then infrared module, then color module, and black flash module. So it is having advantage to take photographs in different module. So if in a very high human movement area, we can use different module to check the different illegal activities or different other activities also. It is having recovery or delay time. Delay time and recovery time means एक कैमरा में एक फोटोग्राफ बाद कितने बार कितने अंतराल में वो दूसरे फोटो खींचने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं. तो ये इसके लिए एक वी रिक्वायर अ गुड प्लेस टू डिप्लॉय कैमरा टैब्स. उसके लिए चयन करना जरूरी है. आपको कोई अच्छा स्थल में जाके कैमरा टैब को लगाना जरूरी है. इसके लिए सबसे जरूरी है we need to have a good place which can be camouflaged and also a human wildlife movement area. And for All India Tiger Estimation Program, we are deploying camera tabs in grid to keep all the area covered over there. So one grid size is 1.41 kilometer to 1.41 kilometers, a 2 square kilometer grid size. And for larger coverage, we require for at least 400 square kilometer area to be covered in this estimation program. So between one camera to another camera, the distance can be 1 to 1.5 kilometer. So these are the grid-based design. Is it moving? Hello? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's moving. Moving, huh? Okay. So when we deploy, it is, you need to know, ये मान के चलो एक रास्ता है, ठीक है, जंगल में ऐसी टाइप की रास्ता चलते हैं, तो ये रोड की एक जगह से दूसरे जगह आमने सामने हम लोग कैमरा लगाने की बात करते हैं। तो एक एक प्रांत से दूसरे प्रांत की जो दूरी है 20 फीट की, अगर हम दूरी मान के चले, तो एक कॉर्नर अगर हम एकदम रोड विड्थ में ना लगा के सेंटर ऑफ रोड विड्थ से मान के चलिए 2 फीट एटलीस्ट अंदर लगाए, और रोड सेंटर से अगर 10 फीट की दूरी हो कैमरा ट्रैप में, तो 8 फीट हो सेंटर से रोड विड्थ, एंड रोड विड्थ टू थोड़ा सा अंदर में जाके 2 फीट अंदर एटलीस्ट हम लोग लगाए, और एकदम आमने सामने ना लगा के एटलीस्ट 2 से 2.5 फीट की एक दूरी हम लोग मेंटेन करके चले, ताकि एक के ऊपर दूसरे फ्लैश ना चौके। तो ये जमीन की भी ऊंचाई हमको लेना पड़े। यू हैव टू डिप्लॉय कैमरा इन 40 to 45 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। हमको चेक करना भी जरूरी है जे वो सही ढंग से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो मैं बताना चाह रहा था, जो आमने सामने कैमरा अगर लगाए तो क्या कंडीशन होगा, ये फ्लैश एक दूसरे की चौकेगा, एंड वी कैन नॉट गेट द ट्रू और एग्जैक्ट द स्ट्राइक पैटर्न, so it can distort your photograph. So we require the camera trap should be at least 1 to 1.5 meter just opposition to other. Then we can get this type of photograph. Is it clear to you? Slide is sir. moving? Yes, sir. Slide is moving? Yes, sir. Slide is moving or not? Yes, sir. Hello? It's moving. It's moving, you know? It's a flash range, and tiger photographs are showing, na? So it's on 42 No, slide. sir. It's on slide number 42. Is it showing over there? 45. 40? Yes, sir. Currently 45. Yeah. So why we shouldn't go exact road width? You will get this type of photographs. Half and overflashed, overexposed photographs. These type of photographs are not required for our estimation. We cannot identify tiger photographs, type patterns from that. So we have to keep camera a little bit ahead, away from the road width, like this way. So you can get a centrally located tiger photographs, and it will give you a good identification process. If you follow through different software, nowadays different softwares are used for identifying those tiger photographs, stripe patterns. So these can give you a good imagery over there. So we have to avoid this type of places where there is a large place to move by tiger. Even tiger can cross behind the camera trap. You won't get the photographs over there. You know that tigers are there, but what is the stripe pattern is very difficult to identify. So you need to deploy camera in certain way that the tiger, he doesn't have any other way to move. So he has to go through the center of the road. So this type of ideal situation we have to look in the forest. कैमरा डिप्लॉय करने के लिए हमको ऐसे टाइप की हैबिटेट को भी देखना है, ऐसे टाइप की लोकेलिटी को भी देखना है, ताकि हम कैमरा को अच्छे जगह में डिप्लॉय कर पाए। फिर हमारे एक बहुत बड़ा इश्यू होता है जब हम लोग क्या कैमरा की टाइप चेंज करते रहते हैं, प्लेसेस चेंज करते रहते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दोस एरियाज आल्सो, जहां हमारे ये बैकग्राउंड चेंज हो जाता है तो पता नहीं चलता जी वो कौन सी ग्रिड में है। तो वी हैव टू वेरी कॉशियस अबाउट दैट। समटाइम्स वी आर वेरी बायस्ड। हम लोग क्या करते हैं, डेंस, बहुत ही डेंस जो सामने झाड़ियां भी है उसकी सामने कैमरा लगा देते हैं, या वाटर होल्स में लगा देते हैं जहां हमारे फोटोग्राफ्स डिसऑर्डेड होने की बहुत सम चांसेस है। लंगूर आएंगे, बहुत सारे स्पीसीज आएंगे पानी पीने के लिए, वो पता चलेगा जो स्पीसीज आ रहा है, पीपल्स एनिमल्स आर कमिंग, बट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज फोटोग्राफ्स। You need to monitor photo database. We have to give some ID, location ID, date and time stamps on the camera when we are deploying the camera. Before that, you have to prepare those things. So selection of locations should be very, if you select a perfect location, it can enhance your capturing the tiger or the target species. So we can maintain this type of monitoring register.
If you are visiting some area, date and time, and also camera tap ID, and then place, battery condition, how many pictures taken, and who are the person who took the inspected those camera tap. And this type of ID can be given on the card. Now we are using digital card. These are the digital our SD card. So you can give some ID. So you can fill in the register, and later when you want to do the analysis, the density analysis, you require particular locations, because specially explicit capture recapture, you require the location, because it's a space and base capture recapture framework. You can create database like that way. This is tentative. You can modify according to your own use. So you this is the 2008 database, all database. If you are deploying camera in different blocks, so you can mention in 2 blocks, and then in the blocks number of cameras, and then in number of cameras different camera you can mention different left and right, this fashion. And when we are coming with the photographs, you can identify, that biometric. So one person's thumb cannot be matched with another person's thumb impression. तो ऐसे टेक्निक इस्तेमाल किए हैं जो टाइगर, हर टाइगर की स्ट्राइप पैटर्न होता है, वो स्ट्राइप पैटर्न एक ही अगर तरह मैंने फ्लैंक की देखे, राइट फ्लैंक की देखे या लेफ्ट फ्लैंक की देखे, वी कैन कंपेयर. इफ इट इज मैच्ड देन इट इज अ सेम टाइगर. इफ इट इज not matched, then it's a different tiger. So in that way we can compare the tiger number. Same thing we are using for leopard also, because leopard, they are also having unique identification marking pattern, like spot or rosette pattern. The same leopard will be having the same marking pattern, whereas the different leopard, they will be having different marking pattern. We can distinguish their sex also based on their scrotum, their sex organs, also their head pattern. So we can distinguish one, this is a male or female. It can be for leopard also, it can be for tiger also. So is it visible or still, or hello? Yes, sir. Hello? Sir, Yes, sir. Visual. Visible, na? Yes, sir. Yes, sir. Huh? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Visual, sir. So, now I am in 59 slide. It is showing over there, na, 59 number slide. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now up to that you are identifying the tiger. Now you have to estimate the population. So we are estimating population as well as density. So population we are estimating with the help of capture recapture framework. Anybody heard about that method, capture recapture? आप लोग पढ़े हैं क्या अपने मास्टर्स में? हम लोग जो टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट करते हैं वो कैप्चर रिकैप्चर फ्रेमवर्क से करते हैं. वो कैप्चर रिकैप्चर फ्रेमवर्क के बारे में किसी को आइडिया है कुछ? हेलो, आप लोग किसी ने पढ़े हैं कैप्चर रिकैप्चर? क्या होता है कैप्चर रिकैप्चर? अगर नहीं पढ़े तो मैं आगे बढ़ रहा हूं. ये कैप्चर रिकैप्चर फ्रेमवर्क इज लाइक दैट, इज अ मॉडल. इफ सर्टेन एनिमल्स it is they are having mark. If first time it is caught, now caught means the camera trap photograph, so it is capture. If it is again caught in different camera traps or different photo capture in different camera traps, then it will be recapture. Multiple capture and recapture, that means the animals is in for the forest only. अगर जैसे माने हम अगर कहीं घर पे रह रहे हैं, अगर हमारे घर पे हम लोग 4 लोग रह रहे हैं, तो 4 लोग हमेशा अपने घर पे ही आएंगे. कभी कभी गेस्ट क्या होता है, 1 बार 2 बार आएंगे, पर वो हमारे घर की पॉपुलेशन तो नहीं होता है. ऐसे जंगल में भी है, सेम टाइप ऑफ चीज जंगल में होता है. अगर हमारे जंगल में हम अगर रहवासी है, उस जंगल में जो टाइगर है, वो टाइगर बार बार एक कैमरा ट्रैप के सामने से आते रहेंगे. तो एक जगह से हो सकते हैं, दूसरे जगह से हो सकते हैं, तीसरे जगह से. ये डिटरमाइन करते हैं वो जंगल की वो रहवासी है. कभी कभी क्या होता है, 1-2 टाइगर ऐसा होता है जो जंगल में आके फिर फोटो कैप्चर होके चले जाते हैं. दे आर नॉट ट्रूली द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया. दे आर स्नीकर्स. दे माइट क्रॉस, दे माइट कम, दे माइट केम फॉर सम डिफरेंट पर्पस. तो वो दे कैन नॉट बी
considered as a population, true population. Though close capture recapture framework में single capture हमारे टाइगर पॉपुलेशन के आधार पर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिंगल टाइगर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट कैप्चर रिकैप्चर फ्रेमवर्क अगर हम माने जिसके लिए हम एक पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, हमारे बेसिक एजम्पशन होता है दैट द एरिया वुड बी जियोग्राफिकली क्लोज्ड एंड टेम्पोरली क्लोज्ड। मतलब हमको एक सर्टेन टाइम पीरियड में 20 या 25 दिन के एक टाइम फ्रेम में कैमरा टाइप एस्टिमेशन हमको करना पड़ता है, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में हम लोग 25 दिन की एक टाइम पीरियड एक ब्लॉक के लिए करते हैं, और उसको हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि बार बार कैप्चर रिकैप्चर के लिए अगर हम ओपन टाइम फ्रेम रखे हुए एक सर्टेन टाइम फ्रेम अगर फॉलो ना करें, तो वो क्या हो सकता है, जो 1-2 करके जो कैप्चर आता है वो आपको डेटा में नॉइस क्रिएट करेगा। आपकी जब पॉपुलेशन एस्टिमेशन करेंगे एक बायस्ड एस्टिमेशन होगा, प्रिसिशन बहुत हाई होगा। तो हमको क्लोज टू प्रिसिशन मतलब हमारे जो एक्यूरेसी की तरफ अगर हमको देखने के लिए हमको कैप्चर के साथ साथ कैप्चर होना भी जरूरी है। जस्ट लाइक अगर हम एक तालाब की बात करें, ये मान के चलिए मिक्स ऑफ स्पीसीज है, ये पहले बार जो हमको आया वो मार्किंग किए हम लोग, तो जो फर्स्ट टाइम आया वो हमारे ये मार्किंग वाला है, ये कैप्चर है। इसके बाद हम लोग उसको मिक्सअप कर दिए। साधारण अगर एग्जांपल देखें तो ये मल्टीपल एरिया, ये सिर्फ हमारे एक ही जगह में नहीं है, मल्टीपल एरिया में उसके कैप्चर हो रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये जो पिंक कलर की दीज आर रिकैप्चर, ये होता है कैप्चर एंड रिकैप्चर। ये पूरा डेटा जो एनालिसिस होता है हमारे एक प्रोग्राम मार्क करके एक सॉफ्टवेयर है, इस मार्क सॉफ्टवेयर में हमने डेटा को ऐसे सजाते हैं और सजा के हमने कैप्चर रिकैप्चर फ्रेमवर्क में डेटा को एनालिसिस करते हैं। इज इट विजिबल टू यू एंड एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. विजिबल है ना? Yes, Yes, sir. sir. उसकी बाद आता है हम लोग डेंसिटी एस्टिमेट करते हैं कैमरा टैप फोटोग्राफ से। डेंसिटी एस्टिमेट क्यों करते हैं? बिकॉज डेंसिटी इट कैन गिव यू अ कंपैरिजन विद प्रे डेंसिटी। इफ देयर इज नंबर ऑफ टाइगर डेंसिटी इज हाई, वी हैव टू कंपेयर विद द नंबर ऑफ प्रे डेंसिटी आल्सो, if it is also high or not, because if it is not high, then the tiger will move out from the forest and they'll come for hunting our local domestic cattle, though conflict can be increased over there. So density of tiger need to be an equilibrium state with density of prey species. So these are the using SEs here. That's why we are now using in a very close manner. So our earlier we used to follow a 4 square kilometer grid. Now we are following 2 square kilometer grid size to get more accurate data, because leopard they are having very small home range size. So multiple capture can be obtained if you have a very grid size can be smaller. So our focus not only in All India Tiger Estimation Program, not only in tiger, we are also focusing leopard, because tiger and crow predator they are equally important for conservation of a large landscape level planning. So apart from estimation of population, we can get their movement area through camera tap. If a tiger there multiple area they can capture in multiple area, then we can at least maintain a polygon and we can say this tiger is particularly their movement area is certain place, or the movement area might be 40 square kilometer or 20 square kilometer, like that way. From camera trap photographs also we can get the minimum movement area of a tiger. Apart from that, we are also estimating the regional tiger photo database. This is mostly utilized for identification purpose as well as for detection of crime. Sometimes this software, extract compare software, is very useful tools for these days, and it is working in a mathematical framework. If you are interested, you can search on Google on this Dr. Lake CV, the British biologist who he is engineer, but he developed this software for identification of tiger stripe pattern easily, because now we are getting up to crores of photographs. You must have heard that last year estimation, the photographs we obtained in All India Tiger Estimation Program, that is recorded by Guinness Book, that this number of photographs or this number of tiger photographs never been captured in other estimations program. So it is the largest estimations program across the globe. So this is saying that our credible monitoring system
So apart from camera tap, now we will talk about radio telemetry system. Anyone heard about radio telemetry among your batch? आप लोग कोई Yes, सुने? sir. Yes, sir. Yes, sir. देखे हैं आप वो कभी रेडियो टेलीमेट्री के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ देखे रेडियो टेलीमेट्री? किस Sir, पर्पस यूज होता है? elephant में sir थे sir. एलिफेंट में देखे हैं आप लोग? अच्छा. Yes, sir. Radio telemetry is a device from where you know where the animal is. एनिमल कहाँ है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन. ये विजिबल हो रहा है? मैंने जो स्क्रीन को अपर किया हो. Yes, sir. Yes, sir. Is it visible? तो ये रेडियो Yes, sir. टेलीमेट्री, Yes, sir. Visible. विजिबल ना. रेडियो टेलीमेट्री ऐसा डिवाइसेस है जिस डिवाइस से हम लोग स्पीसीज की सही ढंग से ये कर सकते हैं. ठीक है. मूवमेंट स्लाइड मूव नहीं हो रहा ना. ये मूव हो रहा है अभी, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 72 number slide. 72 नंबर स्लाइड. मैं दोबारा ये करके देखता हूँ क्योंकि वीडियो टेलीमेट्री में एनिमेशन है. जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, I was trying, but it is not actually moving. But is it visible to all of you now? Yes, This is the devices which can track the animal where it is. The radio telemetry devices. So we use it for different tracking animals. You have rightly mentioned that we are tracking our elephant, large ranging species. In historically, also we have used historical means from long time in Nepal, in India, in Russia. We used for tiger tracking. Also, we used for different tracking animals like elephant and also tracking leopard. All ground species like your sambar, cheetal. So different areas we use to track animals because those species which cannot be tracked, then they can be tracked through radio telemetry. Exact locations can be obtained from radio telemetry devices. So this is the darting equipments, mostly the darting gun, 10 injet gun we are using for darting any species. These are the needles, the ketamine, xylazine, that sedated drugs we are using, and mostly weight. We are considering weight to perform these activities. It is a technical job, so mostly our role is not for darting species and other things. Do you know that difference between immobilization and tranquilization? कोई बता सकते immobilization and tranquilization में अंतर क्या है? कोई बोल सकता है? हेलो.
इमोबलाइजेशन एंड ट्रैंकुलाइजेशन, हम लोग जब हाथी को करते तो बेहोश जो करते ना, ये दो वर्ड आप लोग जान लीजिएगा। हम लोग कभी बड़े स्पीसीज को जब भी बेहोश करते हैं तो उनको हम ट्रैंकुलाइज करते हैं, मतलब कंप्लीट स्लीप में ले आते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रैंकुलाइजेशन। द एनिमल won't feel what is happening over there because it will go for a complete sleep. हम लोग टाइगर को इमोबलाइज नहीं कर सकते, भी वो काटने के लिए दौड़ के आ जाएगा। हम ऐसा स्पीसीज की है जैसे स्मॉल स्पॉटेड डियर हो, उनको हम बेहोश जब करते हैं कंप्लीट सेडिशन में नहीं जाते, इमोबलाइजेशन करते हैं। इमोबलाइजेशन कैन बी ओरल, यूजिंग ओरल ड्रग्स आल्सो, बट फॉर दिस ट्रैंकुलाइजेशन मींस कंप्लीट स्लीप, we need to have a distance and we'll do it through the darting equipments like Telinzet gun and all. तो ये चीज को आप लोग को कभी सवाल पूछ भी सकते हैं। इमोबलाइजेशन एंड ट्रैंकुलाइजेशन, ये दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हाथी के लिए भी हम लोग ट्रैंकुलाइज करते हैं क्योंकि वो भी लार्ज रेंजिंग स्पीसीज है, लार्ज बॉडी स्पीसीज है। कभी भी अगर जग जाए तो इनको जब हम बेहोश करते हैं, मैंने कम से कम 15 से 17 बार टाइगर को बेहोश किया, कॉलरिंग टाइम एक्सरसाइज में भी किया। मैं एमपी की बहुत सारे टाइगर को कॉलर पहनाने में रहा हूँ। साथ साथ मैंने जो गौर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम 2012 में हुआ था, तो उस समय भी हम देखे हैं। तो ये जो बड़े बॉडी स्पीसीज है, वी ऑलवेज गो फॉर कंप्लीट सेडेशन, दैट इज ट्रैंकुलाइजेशन। फॉर लोअर स्मॉल बॉडी स्पीसीज वी यूज्ड टू गो फॉर immobilization. They cannot move, but they know what is happening over there. So through that immobilization technique, we can also radio collar or that species also. So those are the radio collaring equipments, and these are the radio collar actually. These are the VHF collar. You must be knowing the difference between VHF and satellite collar. VHF collar is a very high frequency collar. Only the transmitter and receiver devices are they are only functioning over there. So in VHF collar, these are the antenna, and look, the signals will transmit from these devices and it will be received by this type of receiver. So this will work over there. But in case of satellite collar, we'll be having another device that is called server. I'll show you the photograph. तो ये different type of सैटेलाइट कॉलर है। सैटेलाइट कॉलर की क्या खासियत है? सैटेलाइट कॉलर की खासियत ये है जो हमको अगर कभी भी कोई भी जानवर की VHF मतलब उसको ट्रैकिंग करने में अगर चूक गए, अगर लार्ज रेंजिंग स्पीसीज में हो सकता है। हम लोग जब सरिस्का में टाइगर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में रहा, उस समय इतना अरावली की हाई है, जो फर्स्ट टाइगर इंट्रोडक्शन हुआ था 2008 की बात है, आप लोग सब सुने होंगे। तो उस समय जो टाइगर मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे तो बहुत मुश्किल होता था उसको दिखने में, उसको ढूंढने में। सैटेलाइट कॉलर में क्या है, अगर आप एक दो दिन मिसिंग भी हो जाए तो वो सैटेलाइट की लोकेशन से आप पता चल सकते थे एनिमल्स आर समवेयर नियर बाय अस। तो वो लोकेशंस को हम पिन पॉइंट करके फिर हम टाइगर को ढूंढ सकते हैं। बट एग्जैक्ट लोकेशंस के लिए आपको जो VHF डिवाइसेस से जो उसकी जो सिग्नल आ रहा है, बीप बीप आ रहा है, उससे हम अगर वो डेंस एरिया में रह रहे हैं तो उस डेंस एरिया में हाथी की पीठ से या कुछ दूसरे साधन से हम जाके उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये डिवाइसेस के माध्यम से हमने देख सकते हैं, एनिमल्स को ढूंढ सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। इनकी जो रेंज देखा गया है, जो प्लेन एरिया में 6 किलोमीटर तक है, whereas in the hill that range is 3 to 4 किलोमीटर। क्योंकि जो खाड़ी में आ जाते हैं तो वो बाउंस इफेक्ट होता है, मतलब एक कॉलर की जो ट्रांसमिशन होता है सामने वाला पहाड़ी से ऐसे लगता है कभी कभी जो वो सामने में भी है कभी पीछे भी है। तो जब रीजेस में हम जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलर की जो फ्रीक्वेंसी की गेन को हम लोग एडजस्ट करते हैं, तब ताकि पता चले एकदम पिन पॉइंट कर लेते हैं। देन वी कैन ट्रैक द एनिमल वेयर इट इज कमिंग, द सिग्नल कहां से आ रहे एग्जैक्टली, सामने वाला अगर लोकेशंस है, पीछे वाला लोकेशंस में कौन सी जगह से आ रहा है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट हम लोग गेन आगे पीछे करके इसकी कर सकते हैं। ग्राउंड ट्रैकिंग इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडियो टेलीमेट्री के लिए, ताकि हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउंड ट्रैकिंग थिंग। Then we are doing a GPS, we are noting down in ground tracking also, we are noting down the GPS locations because it is essential to estimate the home range and all. In case of satellite collar, this type of, if animals are fitted with satellite collar, these locations will be transmitted. We do have some GPS over there, and the difference GPS then again received by our receiver devices, and they will be transmitted to our location, particular area.
and we can receive in our. We are having a software, and with the help of this software, we can get the locations of tiger. We can easily plot on the map, and we can exactly locate where the tiger is, or leopard is, or whatever the target species is. So this is the basic how satellite caller is particularly working. And the help of satellite caller, we can calculate the home range size, or GPS caller. Basically, we are using the home range size, meant the area which is largely utilized by any species for thrive. So this is the different activities. We can study on hunting pattern. We can study their recruitment pattern. We can study their feeding behavior, feeding strategy, and also we can know how a tiger is reared. आप लोग में कितने लोग कॉलर वाली की नाम सुने हैं? कॉलर वाली टाइग्रेस के बारे में सुने हैं? सुने हैं कोई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आप लोगों के साथ मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा। ये कॉलर वाली को कॉलर मैंने पहनाया था, और मेरा दिया हुआ नाम था। बहुत ही अमेजिंग फीमेल है। ये जो फोटोग्राफ्स है वो कॉलर वाली की है। वो बच्चे को लेके जा रहे थे। ये मैंने 16-17 दिन बच्चे को, दोनों को मैं कॉलर पहनाया था, बच्चे को भी और माँ को भी। तो इसकी जरिए से पता चल जाता है जे वो कहाँ है। और बच्चे को वो जो छोड़ के जाना, उस समय प्रैक्टिस करवाना, जो आपको हंट करना है, आपको सीखना है, आपको जाके देखना है जो किस जंगल में आप रह रहे हो, बाकियों के साथ लड़ना है, वो जूझना है। आपको मैं एक शेल्टर देके जा रहा हूँ, आपके पास नहीं आऊंगी। तो ये जो शिक्षा की जो तरीका जो है मम्मी की, माँ कॉलर की, ये कॉलर वाली से मैं सीखा हूँ, देखा भी हूँ, ऑब्जर्व भी किया हूँ। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला जो कैसे टाइगर अपने बच्चे को पालते हैं। तो कॉलरिंग डिवाइसेस, बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, वो गले में पैसे ये पहना देते, पर साइंटिफिक कम्युनिटीज की हमको उस बातों में नहीं आना चाहिए। हमको एक ऐसे नोवेल डिवाइसेस है जिसकी एनिमल्स को पिन पॉइंट करके उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, उनकी डिफरेंट जो एक्टिविटीज होता है, जो एक डिफरेंट बिहेवियरल एक्टिविटीज है, उसके बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। और ये जो हम लोग कॉलर पहनाते हैं 2 से 4 साल एक टाइम फ्रेम में, हम लोग उनकी डिफरेंट लाइफ साइकिल की डेटा हम लोग एकत्रित करते हैं। तो ये नहीं है जो हम लोग थ्रू आउट लाइफ उनको कॉलर पहना के रखे हैं। तो ये चीज है, ये ऐसे डिवाइसेस है जिसके चलते भी हम लोग डिफरेंट इंडिविजुअल्स को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे प्रीडेटर मॉनिटरिंग। इसके बाद हमारे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रे बेस्ड मॉनिटरिंग। प्रे बेस्ड मॉनिटरिंग के ऊपर विस्तृत रूप में कल रजनीश जी ने आप लोगों को बताया रिगार्डिंग डिफरेंट what we are following for All India Tiger Estimation Program, this line transit and all. So why prey based monitoring is important? Because prey and predator, they are maintaining the equilibrium. If you looked at the All India Tiger Estimation Program, means high prey density supports the high tiger density. This is the equations. Lotka Volterra, that famous scientist, they developed one statistical formula. They found that there is a cascade effects in prey and predator relationship. Means if prey base is high, then predator is also high. If prey base is low, predator is low. So this type of cascading event is happening over there, and that is called as Lotka-Volterra equation. You'll read in you may search on Google. You'll get very interesting information on Lotka-Volterra equation. And this is the same thing we are seeing that in tiger estimation, that if prey density is high, then will be high tiger density. In different time span, we are using different counting method of herbivore, prey species. Earlier we used to follow the total count method. That means the entire area of the reserve is searched and all the animals encountered are counted. It involves more people, more resources, but it doesn't give us accurate, even a precise estimations process. Then total there are a lot of problem. You can count a small area, you can count all species, but if in a large ranging species like elephant, in now Chhattisgarh, a lot of elephant movements are there. So if you want to count, so total count cannot be possible. So we'll be having some different method technologies to count those species. Then we followed the sample count with the particular areas. We can count those species, but it was also not statistically robust. Then we followed the block count, particular block.
we used to follow some methodologies to count those species. The observed move through an area in a predetermined pattern. The entire area is divided into different counting blocks. All target species is counted in these blocks. But it is possible. कभी संभव हो सकता है क्या? Biologically ये possible नहीं है, feasible नहीं है. Then हम लोग फॉलो करते हैं वाटर होल सेंसस. स्टिल इट इज फॉलोड. इन शरद पूर्णिमा की रात में बहुत सारे जगह वाटर होल सेंसस फॉलो किया जाता था. वाटर होल सेंसस के माध्यम से हम लोग हर्बीवोर की पॉपुलेशन एस्टिमेशंस पहले करते थे. आज भी मेरे को लगता है बहुत सारे स्टेट में ये फॉलो होता है. खास करके महाराष्ट्र में ये टाइम में वॉलंटियर्स भी रिक्रूट करते हैं. आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये क्या होता है, वाटर होल सेंसस के माध्यम से टोटल स्पीसीज की काउंटिंग हो सकता है. एंड देन उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ. एंड देन व्हीकल बेस्ड ट्रांजिट. देन सम व्हीकल if it is moving inside the park with a limited speed like 20 per hour, and two observer can record just like a line transit. It is also working. It is 10 to 5 kilometer we can 5 to 10 kilometer we can walk, and some like vehicle drive, and both of the sides whatever the species we observe. But in line transit we used to do the angular distance, means distance from where to the target species. But इनकी केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं. हम सीधे एनिमल्स की दूरी या नाप सकते हैं, डिस्टेंस नाप सकते हैं. तो ये जो बेसिक जो थ्योरी है इसमें है डेंसिटी हमको एस्टिमेट अगर करना है तो नंबर ऑफ एनिमल्स डिवाइडेड बाय दो, मैंने दोनों साइड में हम देख रहे हैं. लेंथ मींस जो लंबाई जो ट्रांजिट की चल रहा है, मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसलिए हमको ऑब्जर्वेशंस काफी लेना जरूरी है. पर ये भी कभी बोल रहे हैं जो इसके लिए बहुत वी नीड मोर सैंपल एंड रैंडमाइजेशन ऑफ लाइन इज नॉट फॉलोड एक्चुअली. दैट्स व्हाई दिस मेथड, इफ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन देन वी कैन गो विद व्हीकल बेस्ड ट्रांजिट आल्सो. आप लोग अगर कभी एनिमल ऐसे अबंडेंस वाला एरिया में जहां पॉसिबल नहीं है लाइन ट्रांजिट फॉलो करने के लिए, यू कैन एटलीस्ट गेट द मिनिमम डेटा यूजिंग व्हीकुलर बेस्ड ट्रांजिट. ठीक है. तो methodology I've already said about. Then now coming to the line transit method, which is widely used. Initially it was started by King, RT King, and then it is called as King's transit initially. Then now we are using line transit because we do follow a straight line and we are working in the line transit, and we used to count whatever species either side. And then it is developed with time. Leopold, then Anderson, Barnum, Buckland, they redefined the methodology techniques. So this based on some assumptions. What are those assumptions? Animals are randomly distributed. कह सकते हैं एनिमल्स आर डायरेक्टली ऑन द लाइन, विल नेवर बी मिस्ड. अगर एनिमल्स लाइन के ऊपर है वो मिस नहीं होना चाहिए. हमको काउंट में उनको डिटेक्शन करना जरूरी है. वो रहेंगे, कभी कभी जंगल में भाग भी जा सकते हैं. पर जो जगह हम लोग पहले बार एनिमल्स को देखे उसी मान के चलिए हार्ड लिविंग स्पीसीज लाइक स्पॉटेड डियर, हमको उसकी सेंटर को देखना है. सेंटर देख के उनके सेंटर में हमको उनकी डिस्टेंस को मेजर करना है. तो वो एनिमल हार्ट को देखना जरूरी है. डिस्टेंस एंड एंगल्स हम लोग को करेक्टली मेजर करना है, तभी जाके हम लोग उसकी सटीक डेंसिटी एस्टिमेट कर सकते हैं. और इस साइटिंग्स एक स्पीसीज के साथ दूसरे स्पीसीज की जो साइटिंग्स है वो साइटिंग शुड बी इंडिपेंडेंट इवेंट. अगर आपको कोई एक हार्ड लिविंग स्पीसीज दिख रहा है, आप जंगल में चल रहा है, अगर मिनिमम दूरी एक हार्ट से दूसरे हार्ट की दूरी 30 से 35 मीटर है तो आपको वो दो हार्ट मानना पड़ेगा. एक हार्ट हम लोग नहीं माने, मतलब झुंड जो हार्ट हम लोग जो बोलते हैं उसको झुंड जो है, दो अलग अलग झुंड मान के हम उनको काउंट करेंगे. सो वो उसको अच्छे एक डिजाइन बनाना जरूरी है, जो कल रजनी जी बोले हैं. जो हम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के लिए हम लोग एक से मिनिमम 1 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 से 2.5 किलोमीटर तक हम लोग दूरी 3 बार वॉक करते थे अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड इसकी जो असम्पशन है, जो डिस्टेंस बिटवीन ट्रांजिट, कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है एक ट्रांजिट से दूसरे ट्रांजिट की दूरी, जैसे हम लोग कैमेटा के मेथड में फॉलो करते हैं, तो ट्रांजिट में भी एक सिमिलर टाइप ऑफ हम लोग को एक हाइपोथेसिस है. एक ट्रांजिट से दूसरे ट्रांजिट की दूरी अगर फॉरेस्ट एरिया है तो 5 किलोमीटर लेना है. अगर ओपन कंडीशन है मिनिमम दूरी एक से दूसरे की 1 किलोमीटर रखना है, ताकि हमारे ऑब्जर्वेशन में बायसनेस ना. एक कभी हो सकता है दोनों पैरेलल हमको ट्रांजिट नहीं लेना है,
ऑपोजिट ऑफ, हम जब ट्रांजिट चल रहे हैं, ऑपोजिट ऑफ सनलाइट नहीं लेना, ताकि क्या होगा, हमको डिटेक्शन करना है तो एनिमल को हम डिटेक्शन नहीं करेंगे, हमारे आंख के ऊपर सूरज की रोशनी आ सकते हैं। तो ये सब जो बेसिक बेसिक चीज को हमको फॉलो करना है। दिस इज द ट्रांजिट लाइन। ये आप देखिए, इसकी लाइन जो है सीधे सीधे लाइन, डिफरेंट बीट को हम लोग सैम्पलिंग यूनिट बना के, पेंस टाइगर रिजर्व की एक मैप है जिसमें डिफरेंट बीट को हम बना के एक एक बीट में एक एक ट्रांजिट हमने डाल के वॉक करते थे। ये देखिए आप लोग, ट्रांजिट की अगर पूरा मैंने जूम कर लिया हो, जो ये पूरा ट्रांजिट की एक नक्शा है। ये हम लोग जो जीपीएस रीडिंग की स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन डालते, तो ये ऐसे टाइप की सीधे टाइप की नक्शा आ जाते हैं। तो ये हुआ है ट्रांजिट लाइन। इसके बाद ये हमको जंगल में ऐसे कोई भी जानवर चले तो उसको सर्च करना है, उसको काउंट करना है, उसके लोकेशंस लेना है, उसकी बियरिंग लेना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमको ऑब्जर्वेशन, स्पीसीज क्या है, स्पीसीज में नर मादा कितने हैं, अगर हम पॉसिबल है तो नर मादा की जगह वयस्क बच्चे कितने हैं, वो अगर हम काउंट कर पाए वो भी हमारे लिए अच्छा है। हम डिफरेंट डिवाइसेज यूज करते हैं, जैसे एंगल नापने के लिए हम वी आर यूजिंग सुंटो कॉम्पास, एंड फॉर मेजरिंग आवर डिस्टेंस वी आर यूटिलाइजिंग रेंज फाइंडर। ये पूरा डेटा जो अभी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो ऐप बेस्ड है। एक एंड्रॉइड ऐप जो एमस्ट्राइप एंड्रॉइड ऐप, ये WII और NTCA ने डेवलप किया है। ये ऐप में हम लोग ये पूरा डेटा को प्रोविस्ट करते हैं। वी आर इंसर्टिंग डेटा एंड वी आर गेटिंग बेटर आउटपुट ओवर देयर। And this is the line transit. The species which is observed in front of you will be counted. In this year also we are counting some species which is behind of us also, but mostly we are counting the species which is ahead of us. ये हमारे एक ट्रांजिट लाइन की सीधे होता है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो हमको एंगुलर बियरिंग एंड जहां हम लोग खड़े वहां से स्पीसीज के डिस्टेंस लेना जरूरी है। जो पिथागोरस थ्योरम है उसके माध्यम से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग इसीलिए काउंट करते हैं ताकि हमारे साइटिंग डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाए। वो साइटिंग डिस्टेंस एंड साइटिंग एंगल मिला के हमको एक डेंसिटी एस्टिमेशन करने के लिए जो विड्थ है, स्ट्रिप्ड विड्थ है, वो स्ट्रिप्ड विड्थ तैयार करने में ये सफल करवाते हैं। तो ये एंगुलर साइटिंग डिस्टेंस जो मैं बताना चाह रहा था, परपेंडिकुलर साइटिंग डिस्टेंस इज फॉर डेंसिटी एस्टिमेशन। सेम फॉर्मूला इनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जब परपेंडिकुलर साइटिंग डिस्टेंस हमको अगर मिल गया है तो फॉर टू साइड्स ऑफ द ट्रांजिट, लेंथ ऑफ द ट्रांजिट एंड परपेंडिकुलर साइटिंग डिस्टेंस, नंबर ऑफ एनिमल्स डिवाइडेड बाय, बिकॉज़ आवर थ्योरी क्या है, डेंसिटी के लिए ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन, बट it is automatically calculated through a software that is called distance. डिस्टेंस में हमको डेंसिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देते हैं। तो उसके लिए हमको डेटा को सही ढंग से एंट्री करना पड़ता है। हमको एनिमल की जो भी जानकारी, न्यूनतम जानकारी है, वो जानकारी हम लोग उनमें स्पीसीज स्पेसिफिक हम जानकारी डालते हैं। देन वी आर गेटिंग रिजल्ट आउटपुट फ्रॉम डिस्टेंस सॉफ्टवेयर, द डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। ये एक रोबस्ट मेथड है, एंड रोबस्ट मेथड में इसकी जो माने वी कैन कैलकुलेट exact density of a particular species but it has some negativity. Some small bodied species are not properly detected, because detection is very important on line transit. Detection probability is actually calculated, and it can be calculated to insert the formula, and then we can get the exact accurate density over there. For tiger population estimation, camera trap based tiger population estimation, it is based on capture probability. For line transit based of density estimation, you will get the detection probability. So this probability, equation probability, is very essential. You can read those things. The detection probability and capture probability. Capture probability means multiple capture. उसकी probabilities क्या हो रहा है? जब एक हम जो theory of probabilities में देखते हैं ना, जो कितने बार एक सिक्के को हम लोग उछालें तो कितने बार उसमें हेड और टेल, ये ऐसे एक बार एक नॉर्मल वे में हम लोग कैमरा लगाने के लिए बाद कितने बार वो कैप्चर होने की और चांसेस है, कितने बार अगर हम लाइन ट्रांजिट चल रहा है कितने बार उसको डिटेक्शन करने की, सही ढंग से डिटेक्शन करने की, वो प्रोबेबिलिटी की भी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइन ट्रांजिट बेस्ड डेंसिटी एस्टिमेशंस में। तो ये जो है, ये हमारे पूरा जो प्रोसेस में आपको बताया, वी आर यूजिंग इट फॉर टाइगर एस्टिमेशंस। एंड व्हाट वी लर्न, radio telemetry studies, camera trap studies says us the tiger needs a large tract of undisturbed forest to thrive.
this type of forest tract is there, then tiger can easily propagate. The tiger can easily, they can roam freely over there. And if we have the ample prey base, because we require multiple prey species, it is assumed that from 500 base pair of cheetal, tiger may take 70 to 75 cheetal per year. Means three days per kill. So for tiger, they go for 6 attempts. So we require much more high density area, then tiger can at least kill a species after out of his 6 attempts. So this is also a majorly required thing, that we need to have a large prey base. Then tiger is a prolific breeder, require highly dense area to rear its cubs. Earlier we had 9 subspecies of tiger. कोई बता सकते हैं कितने subspecies से? Hello? Yes, sir. है क्या नहीं है? कितने subspecies थे विवेक Sir, 9. टाइगर में? Sir, 9. बताया ना 9. Yes, sir. अभी कितने हैं? Now we have only 6 subspecies. 6. Okay. Yes, sir. Yes. 6, हाँ 6 subspecies. उसमें भी इंडो चाइना टाइगर एंड साउथ चाइना टाइगर की क्या भविष्य है कोई नहीं बोल सकते. We lost tiger from Laos. We lost tiger from Cambodia. Day before yesterday, Cambodian ministerial came over there. They are also requesting us to provide tiger. Like we got cheetah, they also want tiger from us. So the Sumatran island was once home for 3 tigers. China was with 4 tiger subspecies, but Sumatra also they are having 3 subspecies of tiger. Now we do have only 1 tiger, that is Sumatra. Panthera tigris sumatri, but we lost Panthera tigris javanese, Panthera tigris japonica and Panthera tigris bali. बाली नहीं, तो ये जो सबस्पीसीज जो है बाली और जावान टाइगर, ये दोनों सबस्पीसीज जो है ये सुमात्रन आइलैंड से खत्म हो गया. तो वी नीड सम मॉनिटरिंग सिस्टम. ये देखिए, यू जस्ट सी दैट मैप, जो हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशंस, ये एक दर्शाता है जो टाइगर के डिस्ट्रीब्यूशंस काफी कम हो गया. पहले जितना एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, नाउ वी हैव अ वेरी स्मॉल एरिया फॉर देयर, माने एटलीस्ट 7% from the original habitat now we are having for tiger. So tiger means what? Tiger means conservation of a entire biota. Tiger means conservation of entire small species. Tiger means conservation of entire local inhabitants also. So we need to conserve our tiger, to conserve our own self. If you see condition about India, we are having a positive, we are having a greener pasture from 1411 2006. Now we have 2967. Fortunately, I was the first student of Wildlife Institute of India. I was with the first batch of tiger estimation program 2006. I was part of 2010 and 14-18 also 18. I was part of MP's enumeration system when MP got 526 tiger. That is with the highest number of tiger in state-wise. So I can tell you that this is a good option for you all. That if you want to engage yourself, this All India Tiger Estimation Program, you can learn a lot of things. Whatever I am telling you, whatever experience I have shared with you, all we have learned through this process. Then All India Tiger Estimation, because it is giving you a chance to learn lot of field activities. So the passing out students, I will advise you the next this year cycle is over. Next year cycle means the 6th cycle, that will be on 2026. So you can opt as your career. In Central India, we are offering. We are looking after those activities in India level, pan India level. WIA, Wildlife Institute of India, they are hiring biologists, they are hiring volunteers also. You can engage yourself. In 2006,
I joined over there. Then I learned a lot of things from this All India Tiger Extermination Program. I have developed my career. I have seen a lot of transition in tiger conservation from 1411. Now we are having the maximum number. In 2010, in St. Petersburg, we all different tiger range countries, all different tiger biologists, they across the globe, they joined and they declared that there should be doubling of tiger number. India has already achieved the doubling of tiger number. 2022 was a tiger, tiger calendar. As per the Chinese calendar, it's a tiger year. So 2022 was that year when we all again in St. Petersburg, our all different managers, different ministers, they joined and they estimated the number and all that. Every areas, it is not that that tiger numbers are increasing, but in case of India, in case of Bhutan, in case of Bangladesh, the scenario is really encouraging. So, so with that, I could say, and I've already mentioned that that my journey, my entire exercise is on tiger. I've learned a lot of things with Collar Valley tigress. It is full screen or स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रहा है Yes, sir. एक सेकंड. ये कॉलर वाली टाइग्रेस जो है, शी वॉज एक्चुअली दिख रहा है स्क्रीन? She was a legendary female and mostly recruited cubs over there. Now her offsprings are there, and she majorly, the contributor for numbering of increase of numbering of tiger over there in Pench. So tiger means conservation. Tiger means a good opportunity. Tiger means good air. Tiger means good water. So if we monitor properly the terrestrial predator like tiger and their prey, terrestrial predator and their co-predator and their prey properly with the scientific methods, what I have mentioned about, these are the all advanced scientific methods. Some were adopted earlier, but with the time they are changed, they are modified, they are also improved. The estimation process also improved. Lot of softwares also now have been introduced for estimating accurate number of tiger and other predators, other prey species. So we have to follow those methodologies. And with that, I would like to thank all of you for patience hearing. If you have any questions, I am ready to respond at your questions at per my level. ये मैं एक समरी करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे जो मैं प्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा देख पाया, तो बहुत सारे जगह में आपको इलेबोरेट कैमरा टैपिंग के बारे में बताया गया है, इलेबोरेट साइन आइडेंटिफिकेशंस के बारे में बताया गया है, रजनीश जी कल आपको एआईटी के बारे में बताया गया. तो मेरे प्रेजेंटेशन में आई वाज ट्राइंग टू कंपाइल ऑल दोस थिंग्स टू एटलीस्ट गिव यू माने एक प्रकार आप लोगों की रिफ्रेश करने के लिए फॉर योर मेमोरी. दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, लंच की बाद की जो पीरियड रहता था हम लोग भी हो जाते थे, पर आई एम रियली फॉर्चुनेट जो धुरिया सर हम लोगों में वो जो इंजेक्शन डाल दिए थे जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर इंटरेस्ट के लिए, वो इंजेक्शन बाय इंटरेस्ट आज भी हम लोग बरकरार रखे. और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे जूनियर्स में और भी लोग आए जैसे टाइगर एंड वाइल्ड लाइफ फील्ड को अपने करियर जैसे चुने. यहाँ जबलपुर में भी मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, गेस्ट लेक्चर होके या टॉक देने के लिए जाता हूँ. तो लोगों में मैं यही बोलता हूँ जो वाइल्ड लाइफ करियर इज नॉट वेरी बैड. टुडे वाइल्ड लाइफ डे है. टाइगर को, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए पैशन होना जरूरी है. बिना पैशन इस फील्ड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है. मैं तो 2004 की पास आउट हुआ, आज कम से कम 18-19 साल हो गए मैं इसी वाइल्ड लाइफ फील्ड में ही. एक अर्लियर फेज में 1 साल मैं थोड़ा सा दूसरे फील्ड में रहा, जेएफएम के ऊपर काम किया. मैं मैक्सिमम मैं 2005 से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देन मैं ग्लोबल टाइगर फोरम जैसे इंटरनेशनल इंटर बॉडीज में हूँ. 2015 से मैं यहाँ हूँ एज ए साइंटिस्ट पोजीशन में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ है. तो एक फील्ड है जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक पैशन है, तभी जाके आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हो.
तो मैं सभी अपने जो स्टूडेंट्स है उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरे जो सीनियर्स हैं एंड मेरे जो रिस्पेक्टेड जितने बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, मैं सबको अपने नमन कर रहा हूँ। एंड विद दैट पेशेंस हियरिंग एंड ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल्सो वंस अगेन। नाउ फ्लोर इज ओपन टू यू। हेलो हेलो, हेलो यस सर। बताओ। सर इमोबिलाइज और ट्रैंकुलाइज को थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए सर। इमोबलाइज एंड ट्रैंकुलाइज में सीधे अंतर मैं बता रहा हूँ। इमोबलाइज वर्ड की क्या मंतर है? मोबाइलाइजेशन को रोकना, और ट्रैंकुलाइज क्या करना है? सेडेशन करना है, कंप्लीटली स्लीप। एंड ट्रैंकुलाइज प्रोसेस में हम लोग ऐसे कार्निवोर या लार्ज बॉडी स्पीसीज को हम लोग क्या करते, कंप्लीटली उनकी बेहोश करते डार्टिंग गन से, एंड उसमें हम लोग सेडेटिव जो ड्रग्स है, सेडेटिव ड्रग को यूज करके कंप्लीट स्लीप में जाते हैं एनिमल्स, पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। पर इमोबलाइजेशन में क्या होता है, जो एनिमल्स को पता चल जाता है पर वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, वो कुछ नहीं करेगा, आपको जंप भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आप आपकी जो एक्टिविटीज है, उनकी मेजरमेंट है, बॉडी मेजरमेंट लेना, बॉडी की डिफरेंट वाइटल पैरामीटर्स की ऑब्जर्वेशन लेना, रेडियो टेलीमेट्री के लिए कॉलर पहनाना, ये एक्टिविटीज आप कर सकते, पर वो मूवमेंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इमोबिलाइजेशन। क्योंकि ये जो डियर स्पीसीज है, इनकी हार्ट बहुत वीक है, इसीलिए हम लोग कभी भी उनको कंप्लीट ट्रैंकुलाइजेशन को सजेस्ट नहीं करते। जो वेटनरियंस है उनको हम हमेशा एक इमोबिलाइजेशन प्रोसेस से ही उनको हम ये करते हैं। उनकी बॉडी कंडीशंस एंड ऑल जो पैरामीटर्स की जो रिकॉर्ड्स है वो हम इमोबिलाइजेशन माध्यम से ही लेते हैं। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, मूवमेंट को रोकना इमोबिलाइजेशन, एंड पूरा कंप्लीटली स्ट्रिक्ट जो ये करते हैं वो ट्रैंकुलाइजेशन हम बोलते हैं। ये रेडियो टेलीमेट्री की एक प्रोसेस। ओके सर, थैंक यू। Sir, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, I have a question. How tiger its help in the microbes increment, or how tiger increase helps in small organisms like microbes या तो insects, इनके भी इकोसिस्टम में कैसे प्रभाव करते हैं ये? टाइगर, जो भी टाइगर रिजर्व है, आपको सीधे एग्जांपल में बता रहा हूँ, कोई भी टाइगर रिजर्व में हम लोग अगर टाइगर को कंजर्व कर रहे हैं, आप बताओ जो हमारे, आप लोग कान्हा गए हैं कभी? कोई लोग विजिट किए हैं कान्हा बाग? वो सब जगह में जो भी टाइगर की जो डंग भी है, वो डंग बिटेल्स, डंग में भी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी उसकी डंग माने जो उसकी जो स्कैट्स जो बोलते हैं, उसके स्कैट्स को डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर माने डिपेंडेंट रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ टाइगर जो हैबिटेट में रह रहा है उसको डिफरेंट पैरामीटर्स को, अपने लाइफ साइकिल को, बायोलॉजिकल साइकिल को फुलफिल भी टाइगर की हम अगर हैबिटेट कंजर्व कर दे तो वो कंजर्व कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर बात आए, डायरेक्ट बात है, जो वो स्कैटिफिकेशन करते उस कैट के ऊपर कुछ दिन बाद कुछ फंगस एंड ये करते, धीरे धीरे वो उसको कंप्लीटली खत्म कर देते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी जो डिफिकेट पैटर्न, उसकी जो डिफिकेशंस है, उस डिफिकेशन से तो सर्वाइव करते हैं। डायरेक्ट अगर हम बोले तो उसके हैबिटेट में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेते हैं। ये टाइगर की कंजर्व करने के लिए हमारे मुख्य उद्देश्य भी है। आप बताइए, कोई अगर जंगल में अगर हम लोग पूरा फॉरेस्ट को कंट्रोल कर पा रहे, फॉरेस्ट हैबिटेट को हमने अगर उसको रक्षा कर पा रहे, तो हमने स्मॉल टू लार्ज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम कंट्रोल कर पा रहे। ठीक है, तो am I clear to you? Yes sir, yes sir. Thank you sir.
और सर गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे लाइक जब हम कैमरा ट्रैप को डिप्लॉय करते हैं तो लाइक वी आर समटाइम्स क्या होता है, हम रेगुलरली फील्ड विजिट नहीं कर पाते, तो रेगुलरली हम डेटा रिट्रीव नहीं कर पाते, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर के वो हो जाते हैं, इमेजेस आ जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या कि मतलब सेग्रीगेट कर सके उस पूरे हाँ, इमेज को वंस एट ए टाइम? कैमरा ट्रैप की एक जो जितने फोटोग्राफ्स आते हैं लार्ज स्पीसीज जो फोटोग्राफ्स है, मैंने एक्चुअली अपने प्रेजेंटेशन को मैं थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश किया। एक कैटरैक्ट करके एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डेवलप किए है। करोड़ ऑफ फोटोग्राफ्स आर कमिंग, नॉट ओनली टाइगर, सर प्लीज ह्यूमन कम अगेन, ह्यूमन मोमेंट्स सर फोटोग्राफ्स आर वो देयर। सॉफ्टवेयर का नाम सर प्लीज कम अगेन। कैटरैक्ट, I'll share with you those software, ठीक कैट है। कैट कैटरैक्ट, CATRAT, एक्चुअली कैट इट ट्रैक, इज ओके हाँ कैटरैक्ट। वो कॉपीराइट ऑफ WI है, सो वी कैन नॉट शेयर दिस थिंग, बट कैटरैक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हमारे जो सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स जो आते हैं ना, आइडेंटिफाइड एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। एक्चुअली सेग्रीगेशन के लिए जरूरत है, लाखों फोटोग्राफ्स को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तो लाखों फोटोग्राफ्स को सेग्रीगेशन करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की, इवन टाइगर की जो स्टाइप पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी जो मैं तुम लोगों को बताया जो सॉफ्टवेयर है, एक है एक्सट्रैक्ट कंपेयर। वो भी एक स्टैटिस्टिकल कंपेरेटिव एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें अगर हम पर्टिकुलर फ्लैंक पैटर्न को उसके सामने रखे, उसको ये करे, तो वो डॉट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में उसको कैलकुलेट करते हैं एक स्ट्राइप से दूसरे स्ट्राइप की क्या डिस्टेंस होगा। वो अगर सही पैटर्न को सही ढंग से करे तो पूरा एक डॉट सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड ये होता है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक एनालॉग माने टाइप की कैलकुलेशन आता है जो बताता है कि ये हमारे 80% या 90% मैच कर रहा है जो टाइगर की जो स्ट्राइप पैटर्न आपको मिला है, और ये दूसरे टाइगर स्ट्राइप पैटर्न की। उसके बाद जब हम लोग इतना इतना तक मैच कर रहे हैं 90% 95%, देन वी कैन मैनुअली आल्सो टैली दोस थिंग। मैनुअल तो करना ही चाहिए क्योंकि फुल लेंथ एक्यूरेसी तभी आ सकता है, पर एक एक लार्ज लेवल में हम लोग उसकी कर सकते हैं। कैटरेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को? अभी मैं 17 को रायपुर आ रहा हूँ, हमारे बाणापाड़ा में काम है। तो मेरे तो बहुत दिन से इच्छा है इससे हमारे यूनिवर्सिटी विजिट करने के लिए। पॉसिबल पता नहीं कितना हो पाएगा, पर मैं रायपुर में 1-2 दिन के लिए रहूंगा। अगर उस समय कोई हमारे जूनियर्स आसपास रहे तो हमारे हो सके मुलाकात भी हो जाए। मैं ऑलवेज रेडी टू मीट। अजय मेरा बहुत ही क्लोज है, मैंने लास्ट इतने साल से हम अजय, हम मेरा इमीडिएट जूनियर था। बहुत सारे जूनियर को मैं मोटिवेट करने की कोशिश भी किया था वाइल्ड लाइफ फील्ड में आने के लिए। इस एफआरए में भी बहुत पोजीशंस आता है, आप लोग के लिए ओपनिंग्स भी है, आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए। इंटरेस्ट में मेरे 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 क्राइटेरिया है, पैशनेट होना चाहिए, थोड़ा रीडिंग हैबिट होना जरूरी है। बाकी तो हम लोग तैयार कर लेते हैं बहुत। हम लोग भी रॉ थे, रॉ से हमारे फैकल्टीज लोग हम लोग की भी बहुत सिखाए। मेरे मेरे गुरु कमर कुरेशियन ये रहे वाइल्ड लाइफ में हमारे धुरिया सर। हम लोग में जब बोलते थे, जब हम लोग ऑल इंडिया, उस समय ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन भी नहीं था, हम लोग अचानक में जाके सेंसस भी किए हैं। उस समय पगमार्क के माध्यम से करते थे हम। मेरे को लगता है आज आज भी बच्चे लोग ज्वाइन करते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में, क्योंकि दुबे जी स्टिल देयर। दुबे जी की एज नहीं हुआ है। आपको याद होगा सर, हमारे उस समय भी वो आते थे। हाँ, हाँ, तो this is really a great opportunity for all biologists. अच्छा अच्छा। सर I'll सर हाँ।
Yes, sir. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Sir, you are mute. Hello, sir. Your voice is. Okay. Uh, okay. So we come to the end of this session, which is validity function of the 2-day workshop on wildlife census methods. In these 2 days, we have 4 technical sessions. The technical session 1, we have one lecture by Sri Rajnish Kumar Singh sir, who is Deputy Director of Peach Tiger Reserve, and he took a lecture on the methods for population count, and he elaborate the things on the various methods for counting that various species such as tiger, vultures, crocodiles, etc. So he gave a very nice presentation and communicate with all the participants. The second technical session, we have 2 lectures. The first lecture was given by Dr. Prabal Sarkar, Associate Professor from the University of Science and Technology, Meghalaya. And he gave his presentation on track and science survey. And he minutely present all the different tracks with different signs which can be useful for identification of species as well as their monitoring and uh, counting. So that was very nice session. In the second day, sorry, in the second technical session, second lecture was given by Mr. Upen Dubey, Senior Project Officer in WWF, India, Central India Landscape, and he gave presentation on 4th phase tiger census methodology, as well as he also elaborate on the identification of various herbivore and carnivore species on the basis of track and their signs and their behavior. So that was also a very nice presentation. In the day 2 of technical session, number 3, we again listen to Dr. Prabal Sarkar sir on the topic of camera trapping methods. He gave details of different technology, the various components of camera trapping, the methodology, and also elaborate the things which is used for monitoring of various species. Then, which is followed by another lecture by Mr. Arnab Basu, who is Wildlife Inspector in Wildlife Crime Control Bureau, Northern Region in Government of India, on the topic of role of students in combating wildlife crime. During this session, he elaborate how a student can contribute in the control of wildlife crime, as well as he also uh, elaborate the Indian Wildlife Protection Act 1972, different their sections, which is useful for not only the monitoring of wildlife population, as well as what to do or what to not do during such type of monitoring activity. And in the last session, last technical session, we have Dr. Anirudh Majumdar sir, who is just giving a lecture on monitoring terrestrial prey and predator at various tropical forests in central India, in which he very descriptively provide the details of all the things to monitor and assess the prey diversity as well as predator diversity in the central India. So these are all the achievement in these 2 days. We hope you students learn a lot and privileged by the knowledge and experience by different resource persons, various speakers. So now I invite Dr. Dhuria sir to. Okay. So, okay.
So we will take a short break for validity function because our chief guest of validity session is coming right now. So we will take 5-minute breaks. After that, we will join again for validity session and the details of certificate distribution and feedback. So please be there. Okay, we will provide feedback form. We'll send the link in the WhatsApp group, which is generated there. So you all please provide your feedback about this workshop. What is your assessment as well as what is your learning? So which will help us uh, to analyze how effective this workshop is for your development, as well as the lacking any lacking during this workshop, which we can modify in our further conferences or workshop, so you can be benefited. So we'll take just a 5-minute break, then after we'll join it again. Thank you. मेरे पास है, मैं व्हाट्सएप में डाल देता हूँ अभी। बाकी तो आपने समझी दे दिया, ब्रीफ कर दिया। नहीं, मैं जैसे सर नहीं आए थे इसलिए कि आप लास्ट का वो दे देते। अरे ठीक है, इसलिए मैंने समराइज कर दिया इसमें। अच्छा किया, समराइज कर दिया, तो ये मुझे रिपीट अब जस्ट सक्सेसफुल मुझे सर मेल शेयर करके तुमसे काम मीटिंग में हम बताने कम्युनिकेशन तो कैंसिल हो गया, तो हो गई नहीं आया इसका कम्युनिकेशन
सभी हैं इसमें अभी 46 दिखाई दे रहे हैं. Welcome all the participants. Now we come to the end of our workshop, and I would like to invite Professor S.C. Tiwari, the Dean of the School of Natural Resources, to address all of us and give his blessings. So please, Tiwari sir. First of all, thank you, sir. I am Devsaram Suman from Central University of South Bihar. I am a student of Political Science Department. But despite I have joined this session, this workshop, due to learn something and due to interest in forestry things or everything. That's why I have joined. Thank you. It was amazing session. Thanks to all the professors and all the participants. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, amazing, sir. It's I am running out of words actually, and I am like a clay pot, sir. And you all, sir, respected teachers and natural resources, all have made me
so much to read and think about the wildlife, and I am always interested in wildlife, but now I am one more step ahead to got more interest in this field. Thank you, sir, for this wonderful session, sir. रहने दीजिए, चलो सुन लो ना। कर दो, जमा हो गया। Thanks, thank you, Thierry sir, for your blessings. Now I would like to invite coordinator of the workshop, Professor S. Dhuria sir, to give vote of thanks. Thank you, sir. सभी हमारे प्रतिभागी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा तिवारी सर ने आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की, हम भी अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ये 2 दिवसीय कार्यशाला जो आयोजित की गई विभाग के द्वारा, जिसमें मैं इस विभाग को कोऑर्डिनेट कर रहा था, नॉट ओनली मी, मेरे साथ में हमारे सहयोगी डॉक्टर अतुल स्कूल कोऑर्डिनेटर थे इस कार्यक्रम के, हमारे साथ में कार्य कर रहे हमारे जो सहयोगी श्री आलोक जी, श्री आनंद, एंड बहुत सारे हमारे रिसर्च स्कॉलर जिनका नाम लूंगा तो बहुत लंबा होगा, विभाग के हमारे सभी शिक्षक जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए कहीं ना कहीं से अपने एफर्ट्स किए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, उत्सुकता होगी कि क्यों नहीं हम वाइल्ड लाइफ में काम कर सकते हैं और करने से हमें फायदा होगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे सभी साथियों ने मिलकर तैयार की
और हमने फाइनली हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर जो इस समय थाईलैंड में बाहर हैं, उनके मार्गदर्शन और हमारे कुल सचिव प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन के कारण हम लोग इस कार्यक्रम को कर पाए। हमेशा हमारे कुलपति जी का मोटिवेशन मार्गदर्शन रहता है कि आप लोग छात्रों के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम करें जिससे उन्हें भविष्य में कुछ कमाने और उन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो कुछ इस तरीके के ऐसे कार्यक्रम हम लोग लगातार विभाग में आयोजित कर रहे हैं। आज के समापन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विभाग के प्रोफेसर एस.सी. तिवारी सर हमारे बीच थे, जिन्होंने आप लोगों को ब्लेसिंग्स दी। ये विभाग के हमारे जो है संकाय अध्यक्ष भी हैं और सर का भी मार्गदर्शन रहता है कि इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें बच्चों के लिए की जाए जिनसे हमारे सब बच्चे लाभान्वित हों। सो पुनः मैं आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तिवारी सर को अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल सर को वह हृदय से आभार करता हूँ। कुल सचिव श्री प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ में जितने साथीगण हमारे काम कर रहे थे, डॉक्टर अजय, डॉक्टर अतुल, डॉक्टर भावना, डॉक्टर गुंजन, हमारे आशुतोष आनंद जी हैं और भी हमारे जो है रिसर्च स्कॉलर साथ में, ये सबकी भूमिका इसमें रही। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं का ये एफर्ट्स था। मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था लेकिन सारा एफर्ट्स उन लोगों का था। सारे 2 दिन में उन्हीं लोगों ने सारा व्यवस्थाएं देखी की है, तो हम सब ने मिलकर काम किया। तो हम उनको भी आशीर्वाद धन्यवाद देते हैं। हम विभाग की तरफ से आप सारे प्रतिभागियों को, जैसा तिवारी सर ने कहा कि हम एक नियर भविष्य में मीन्स ऐसा हम लोगों का सोचना है कि हम लोग जो है 21 मार्च चूंकि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे होता है, उस दिन हमारा दूसरा ये कार्यक्रम होगा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। प्लस उस दिन हम लोग कैसे हम कैमरा को फील्ड में इंस्टॉल करते हैं जिससे हम इमेजेस लेते हैं, तो ऐसी हम लोगों की कुछ कोशिश होगी जिससे हम लोग वहां पर करेंगे। समरी आपको दे दिया गया है। फीडबैक के बारे में कहें तो फीडबैक आप लोगों के बीच से बहुत कम आया, लेकिन ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म हम लोगों ने आप लोगों को सेंड किया, उसमें आप लोग भर के देंगे। आप लोगों को ई सर्टिफिकेट 2 या 3 दिन में मिल जाएगा। तो इस प्रोग्राम को मैं यहीं समाप्त करता हूँ अपने आज के हमारे मुख्य अतिथि तिवारी साहब के आदेश से। तिवारी साहब का आदेश है कि अब मैं कल यहाँ पे इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, धन्यवाद। Delegates, I officially announce the closing of this workshop. The feedback form will be shared on the WhatsApp group, so you all are requested to fill the form and provide your feedbacks about the workshop, as well as in few days the e-certificate will be provided to your mail ID. So with this, I conclude this workshop. Thank you so much, everyone.